Assalamualaikum. I hope you all are fine. Today we will do chapter number 9, physical optics. In review number 9.3, Hygen principle is included. But before discussing Hygen principle, we have to know about the wavefront. What is wavefront? So first I will write the introduction of this chapter. Introduction. What is wave? Very important things to know. What is wave? Wave is the disturbance in medium is called waves. Medium. Disturbance in medium. Disturbance mean up and down or to or fro, or to or fro motion of a body is called disturbance in a medium, is called wave. Now we know what is wave. Now we have to understand what is wave fronts. So first of all, I will give you an example. Like if you take a clean water, suppose it is a river. In river there is a particles. There are always a particles acting on it. So if you throw a source or a stone is thrown, this particles, suppose here it is thrown, so this particle will move up and down, and it will transfer the energy to this particle. Then this particle will transfer energy to this particle, making a wave like this. Here would be like this. So it is making a wave to and up and down motion. It can also move to and fro like this, but here it is moving up and down, so we consider the example of moving up and down. So it is moving like this and forming a wave. So wave, what is the function of wave? Wave carries energy from one place to another. Wave carry energy from one place to another. Now if we take like this, I am taking the wave, for example this wave. This is a wave. Let's suppose in the upper side, these particles of wave are moving in upward direction. For example, if we moving in the upward direction, then moving in the downward direction. उर्दू में मैं समझाती हूँ. अगर आप ब्लैंकेट को झाड़ते हैं तो जब वो झाड़ने का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो ऊपर जाता है पहले, फिर उसके बाद स्लो मोशन में सोचा ना कि झाड़ते हैं तो वो पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है. तो वही सिलसिला यहाँ पर हो रहा है. वेव के पार्टिकल्स सबसे पहले ऊपर जाते हैं फिर उसके बाद नीचे जाते हैं. तो ये क्या है? फेस है. इसे कहते हैं फेस, और इसे भी फेस ही कहते हैं. सेम फेस. वेव फ्रंट्स में सेम फेस होने चाहिए हमारे पास. सही है. तो अब अगर हम कोई सोर्स ले लें, लेट्स सपोज यहाँ पर एक सोर्स लेते हैं. ये है सन. ओके. और यहाँ पर हैं पार्टिकल्स. ओके. तो अगर हम इन पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दें तो ये बनेगी हमारी वेव फ्रंट्स.
वेव फ्रंट्स। ओके, तो ये वेव फ्रंट्स होती हैं। वेव फ्रंट्स क्या होती हैं? तमाम पॉइंट्स को लूकस से ज्वाइन कर देना। तमाम, उर्दू में भी लिख देती हूँ, तमाम पॉइंट्स को लूकस क्या है? इमेजिनरी लाइन, लूकस से मिला देना वेव फ्रंट लाता है। ऐसे उर्दू में भी लिख लें तो जल्दी याद हो जाता है। तो ये लूकस क्या है? इमेजिनरी पॉइंट इज कॉल्ड लूकस। तो ये लूकस है, इमेजिनरी लाइन, तो इसे ज्वाइन कर देना, तो इट्स कॉल्ड वेव फ्रंट्स। नाउ मूविंग टू हाइजन प्रिंसिपल। क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ Huygens principle consists of two parts. पहला पार्ट क्या है? The first part is पहला पार्ट है every point in wavelet, every point on the wavefronts is the source of secondary वेवलेट। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ये सन है, ये सोर्स है, और ये हमारे पास एक वेवलेट है या वेवलेंथ है, और ये हमारे पास दूसरी है, और ये हमारे पास तीसरी है। सही है? ये सन इसका सोर्स है पहली वाली का, तो ये प्राइमरी हो गई, इसे प्राइमरी कहेंगे। प्राइमरी वेवलेट। सही है? फिर उसके बाद ये सेकेंडरी होगी। फिर अगर हम ये थर्ड वाले के रेफरेंस से देखें तो थर्ड वाले के लिए सेकंड वाली प्राइमरी होगी और थर्ड वाली सेकेंडरी होगी, सेकेंडरी वेवलेट। पहले पॉइंट में ये बोल रहा है। और दूसरा पॉइंट है we can locate the position of wavefront. We can locate the position of wavefront after time t by joining the wavelet tangentially. इसका मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ पर वो बना लिया, डिफरेंट वेव फ्रंट्स बना लिए। हमने यहाँ पर डिफरेंट वेव फ्रंट्स बना लिए। ये सोर्स है, सन सोर्स है, यहाँ से हमें मिल रहा है पॉइंट से, हमने यहाँ पर वेव फ्रंट बना लिया। यानी इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया, इसको इसके, इसको इसके, इसको इसके। हम वेव फ्रंट कैसे बना सकते हैं? बाय ज्वाइनिंग these point by touching them tangentially. दिस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास सेकेंड वेवलेंथ हमें मालूम हो जाएगी। और d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू
सॉरी वेव फ्रंट इज इक्वल टू डिस्टेंस टू डेल टी। इसकी जगह वी की जगह सी डेल टी भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये वाली डायग्राम बना देनी है आप लोग ने नीटली, तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है 9.4 कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस, सो फर्स्ट डेफिनेशन, द सोर्सेस having same amplitude, frequency, same frequency and constant phase with comparable amplitude. Amplitude should be comparable, means if the actual value is 10, then the amplitude can be 10.6, means closer to the actual value, comparable, and the phase should be constant or same, and frequency should be same of the wave. Phase difference, constant phase difference is called coherent sources. Coherent means one color, but one color does not exist in the nature. It does not exist. Only sodium exists in one color, which is yellow. So this was all about the, yes, one topic is that phase difference. What is phase difference? Phase difference, if we are having one wave like this and one wave like this, so this is phases are same. In this form phases are same, but if one wave is like this in curve and opposite to it, then this is called the phase difference. Okay, so this was all about the coherent sources. I hope you like this video. Thanks for watching. Allah Hafiz.